પાછી નીકળી ગઈ કેવું પ્રોબ્લેમ આવી જો દરેક વાતના શું આમાં હવે હું મોબાઈલ બંધ કરું છું. नरेश भाई हाँ जी हाँ दिख रहा है अभी आपका नहीं दिख रहा है वीडियो मुझे हाँ आपका दिख रहा है अंधेरे में बैठे हैं अंधेरे में क्यों बैठे हो तिलक रात अंधेरे में नहीं बैठा हूँ अच्छा ओके अभी थोड़ा बाबा की याद में बैठते हैं अभी आवाज जी। बंद करो ठीक है करो। ओके ओम शांति फाल्गुनी बहन फाल्गुनी बहन ओम शांति मिनेश भाई वेलकम वेलकम थैंक यू सो मच रूम मीटिंग में आपका स्वागत है थैंक यू મને बहुत खुशी થાય છે સ્વાભાવિક છે તમને મારો નંબર કેવી રીતે મળ્યો તો ફાલ્ગુની બેન હાજી આપણે મણિનગર થી એક નંદિની બેને ગ્રુપ બનાવ્યું હતું ગુજરાતી રાઈટ અને એમાં આપ એક દિવસ હતા બીજે દિવસે નીકળી ગયા હતા એટલે બાબાએ મને આપની માટે મારી માટે આપ એન્ટર થયા હતા કેમ કે મારો સંકલ્પ ચાલતો તો મને યુટ્યુબ માંથી આપનો નંબર નહોતો મળ્યો એટલે વિચારતી હતી કે હું નેહાબેન ને વાત કરીશ અને સમાવ પછી બધું કઈ ને કઈ રૂટીન ચાલતું હતું પણ પછી બાબાને સંકલ્પ પહોંચી ગયો હતો એટલે જેવો આપનો ફોટો જોયો ને તો નંબર મેં સેવ કર્યો અને પછી મને થયું કે વાત કરીશ એમ તો બીજે દિવસે તો આપ એમાંથી નીકળી ગયા તમે તો બાબાએ મારા માટે મોકલ્યા એકચ્યુઅલી એમાં એવું છે એટલા બધા ગ્રુપ છે કે બધું મેનેજ કરવું જ અઘરું છે કેટલા ગ્રુપ ને જોવા એટલે પછી એને એમાંથી એક્ઝિટ થયો હતો એડમિન મોડ હતો એટલે એવો મેસેજ બી નાખી શકાય એમ નહોતો બાકી નથી નીકળતો પેલા મેસેજ નાખતો સોરી હું લીવ કરું છું પણ હવે એમાં કોઈ ચાન્સ નહોતો એટલે મારે નીકળી જવું ના બરાબર છે થઈ શકે છે એ બધું તો બહુ જ બધા મારો વિડિયો મિનેશભાઈ મારો વિડિયો ચાલુ તમને દેખાય છે મારી સ્ક્રીન હા દેખાય છે પણ કંઈક બીજું અત્યારે તમારો પહેલા તો તમારો ચહેરો દેખાતો તો અત્યારે બીજું કંઈક દેખાય છે બીજી માઉસ અચ્છા એટલે ઓકે હા એટલે ના હું એડજસ્ટ કરું છું તો હું ફરી એન્ટર થવું એવું કંઈક કરું હા એક સેકન્ડ ખાલી હા કેમેરા ઓકે ઓકે હા એટલે યસ હા એટલે પેલો એ કેમેરા એ થઈ ગયો હશે ને એટલે યસ ઓમ શાંતિ જી રુચિ તારું વર્ચ્યુઅલ બેકગ્રાઉન્ડ હટી ગયું છે વર્ચ્યુઅલ બેકગ્રાઉન્ડ રાખવાનું હોય તો કોઈ વાત
ભવલાઈબેન આજે ઓમ શાંતિ તમારો વારો છે ભવલાઈબેન.
Welcome, welcome, hearty welcome. Welcome, welcome, hearty welcome. Welcome, welcome, hearty welcome. Welcome, welcome, hearty welcome. Om Shanti. Om Shanti, brother. Are you brother Minesh? That I have been in contact, and Om Shanti, special Om Shanti for the family of Vadovara. Thank you so much for the invitation and for this opportunity. Welcome. So we have been connecting the whole world since this virus has started. It has been an opportunity for us to know our family in all corners of the world. So it's great to be with you tonight. Vadodara family is welcoming you. And this is Brother Rushi, and he is going to translate your class. Actually, Rekha Ben was appointed as a translator, but due to his medical condition, today she is not available, and that's why this is our emergency translator. Basically, he is from Vadodara, but right now he is at St. John's, Canada, and serving in the region of Sister Judy, Halifax. And this is our Champa Ben, respected Champa Ben, and she is an instrument teacher. And Dr. Jain Bhai and Champa Ben both are Yugal, and they are since Brahma Baba's time in this knowledge, and they are lucky to have sustenance from Sakar Brahma Baba and got Srimat from Brahma Baba to get married. Champa Ben, aap bhi swagat kare. So it's wonderful. Om Shanti, Brother Rushi, who is going to translate me. And can I see the picture of the couple that are instruments there? I'm not seeing them. Yes, Champa Ben. Champa Ben. ये लुसियाना बहन है ब्राजील से. ये लुसियाना बहन है ब्राजील से है. लुसियाना बहन ओम शांति. I'm looking for. Can you spotlight her, because I'm not finding them. Sister Luciana, I have already spotlighted her. Ah, okay. Om Shanti, sister. Yes, Om Shanti. Great to be with all of you. So I understood by what you have said before, Brother Minesh, that you want me to share first some of my experiences, and then maybe we can share something in terms of knowledge. And I'll be very glad if you would like to have questions and answers, because I do like a conversation, so that's also possible, okay? So I'm Sister Luciana from Brazil. Brazil is the biggest country in Latin America. All the countries that speak Portuguese and Spanish in the Americas, that's called Latin America. And Brazil is the biggest country. We have about 220 million people in Brazil. And our language is Portuguese. Sister. You're going to translate, Brother Rushi? Oh yes, I'll be translating whatever you will be saying right now. So, Sister Luciana का ये कहना है कि ब्राजील जो है लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, और ब्राजील में सब पोर्टुगीज लैंग्वेज बोलते हैं, और लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री ब्राजील है. So I came in Guyana in 1979, 42 years ago. लुसियाना बेन 1979 में 42 years हो गए लुसियाना बेन को ज्ञान में. 1979 में वो ज्ञान में आए थे बाबा के संपर्क में. I was very young. I was just 23 years old, and the service had just started in Brazil, and Brazil was the first country in Latin America. So जब सिस्टर लुसियाना ज्ञान में आए तब वो बहुत यंग एज के थे, 23 साल के थे, और ब्राजील में तब सेवाएं जस्ट शुरू ही हुई थी, और नया पूरे लैटिन अमेरिका में पहला सेंटर ब्राजील में ओपन हुआ था, और उनकी उम्र उस वक्त 23 साल की थी. So I feel very honored, and I think many times why Baba has chosen me as the first student of Latin America.
तो उनको बहुत अपने आप पे गर्व होता है इस बात पर, और वो अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट मानते हैं कि बाबा ने लैटिन अमेरिका की पहली स्टूडेंट के तौर पे सिस्टर लुसियाना को चुना है। So when I came in Guyana, I was just finishing my university degree. I am a sociologist and an anthropologist. And then after 1.5 years, I asked Daddy Junkie if I could surrender, and she said yes. So I've been living in the center since then, and not having lockic job, but just doing Baba service. सो जब सिस्टर लुसियाना ज्ञान में आए थे तब उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। वो सोशियोलॉजिस्ट है बाय प्रोफेशन, और जैसे उनकी पढ़ाई पूरी हुई उन्होंने दादी को बोला कि मैं सरेंडर होके सर्विस करना चाहती हूँ, और उस दिन से आज तक वो समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लौकिक में कोई जॉब नहीं करे लुसियाना बेन, फुल टाइम बाबा की सर्विस में अपना समय और जीवन दिया हुआ है। But when I asked Daddy Junkie if I could surrender, she said, I'm going to observe you. And this was on my way to Madhuban. And she said, when you come back from Madhuban, you ask this question again to me. Okay. So जब जानकी दादी को उन्होंने पूछा कि मैं समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देना चाहती हूँ, तब दादी ने बोला ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको परखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। तो वो मधुबन के दौरे पे थे उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि आप मधुबन से वापस आके मुझे दोबारा ये सवाल कीजिएगा कि मैं समर्पित रूप से सेवाएं देना चाहती हूँ, तब मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी। And it was very interesting when I came back from Madhuban and I asked Daddy Junkie, she was in London, and she gave very good teaching, and I keep this teaching with me up to this day. She said, I've been observing you, and I'm going to give you the permission to surrender because I have noticed 2 things in you. First, that you are very active. And second, because your family agrees that you surrender. My family is not Brahmin family. My family is Christian family, very Paka Christian family, but they agree that I surrender. जब वो वापस आए मधुबन से, तब जानकी दादी ने उनको परमिशन दी कि आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे सकते हो, और उन्होंने उनको एक सीख दी जो सीख आज तक सिस्टर लुसियाना के जीवन में वो फॉलो करते हैं। उन्होंने बोला, मैंने 2 बातें आप में नोटिस की है। पहला कि आप बहुत एक्टिव हो, और दूसरा कि आपके परिवार ने आपको परमिशन दी हुई है। सिस्टर लुसियाना का परिवार ब्राह्मण परिवार नहीं है, वो पक्का क्रिश्चियन परिवार है, लेकिन उन्होंने उनको परमिशन दी हुई थी। तो इन 2 बातों की वजह से जानकी दादी ने उनको बोला कि आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे सकते हैं। And Daddy Junkie said something very interesting. She said, it's very dangerous to surrender because some sisters who surrender, then they become lazy. They don't do much. So I have noticed that you are very active, and that's why I give you permission. So जो सीख दादी जानकी ने उनको दी थी वो ये थी कि मैंने बहुत बहनों को ऐसा देखा है कि समर्पित होने के बाद एक्टिव पहले होते हैं, लेकिन बाद में थोड़ी आलस आ जाती है जीवन में। लेकिन मैंने आपको देखा है आप बहुत एक्टिव हो, और आप एक्टिवली अपनी सेवाएं समर्पित रूप से भी देंगे आगे, इसलिए मैं आपको परमिशन दे रही हूँ। So since I became Brahmin, I have been going to Madhuban every year, and some years I go twice a year. So if I count how many times I've been to Madhuban, more than 40 times, 50 times in Madhuban, I think that I have lived some years in Madhuban. Because in the beginning, when I used to come, because Brazil is very far, I used to stay 1 month, 2 months, 3 months in Madhuban every time I would go to see Baba and to go to Madhuban. जब से सिस्टर लुसियाना ज्ञान में आए हैं, मिनिमम साल में 1 बार मधुबन जरूर विजिट करते हैं। कई बार साल में 2 बार आना होता है। तो 42 साल में सिस्टर लुसियाना ज्ञान में इस हिसाब से वो 50 बार के आसपास मधुबन आ चुके हैं। और क्योंकि ब्राजील बहुत दूर है, तो जब भी ये मधुबन आते हैं 1, 2, 3 महीना मधुबन की पालना लेकर ही जाते हैं। And I feel very close to all the daddies because all the daddies have been to Brazil. Daddy Junkie came many times. Daddy Prakashmani came 3 times. Daddy Gozar came also twice or 3 times. Brother Nirver came twice. Brother Bridge Mohan came twice. Brother Ramesh came twice.
Daddy Ratan Mohini came. All the big sisters, the big Maharajis have been to Brazil, and I've been their host. So I feel very, very grateful to have had the opportunity to be close to them. So सभी वरिष्ठ महारथियों को जो मधुबन में रहते हैं उनसे बहुत समीप अनुभव करते हैं सिस्टर लुसियाना, क्योंकि दादी जान की कई बार ब्राजील विजिट कर चुके हैं। रतन मोहिनी दादी, सभी दादियां और वरिष्ठ भ्राता रमेश भाई 2 बार जा चुके हैं, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई सभी 2-2 बार ब्राजील जा चुके हैं, और उनको वहां पे एज ए होस्ट उन्होंने उनको पालना दी। उस हिसाब से उनको अपने बहुत खुशी होती है अपने आप पे, और इस बात का गर्व महसूस करते हैं। And also because of Brazil being very far, every time we would go and take a group to Madhuban, all the daddies would give time to meet the group and a lot of sustenance, a lot of attention I would receive and the group would receive from the seniors. तो जब भी मधुबन ग्रुप जाता है ब्राजील से, तो सभी दादियां बहुत समय देती है, बहुत प्यार और पालना देती है। इस बात से बहुत ही अच्छा महसूस होता है सभी को, ब्राजील सेंटर पे आने वाले सभी को और सिस्टर लुसियाना को भी, कि बहुत समय दादियां और सभी वरिष्ठ भ्राता है, बहनें सभी बहुत समय देती है पूरे ग्रुप को। And why I feel that it's important that we are close to the seniors, because the seniors have been with Brahma Baba and Mama, and we didn't have this opportunity to see them. So it's very important that we are with the foundation of the Yagya. So this is the first thing. Second thing, because the seniors, they have a more elevated stage than we have. So they have this pure feeling, this feeling of benevolence towards every soul. And with their blessings, we can progress a lot. दो बातों की वजह से सिस्टर लुसियाना को ये लगता है कि महारथियों के संपर्क में आने से हमें बहुत फायदा होता है। पहली बात यह है कि जो भी महारथी है वो सब काफी सारे साकार बाबा की पालना लिए हुए हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा की पालना लिए हुए हैं। इस बातों से उनके जीवन को देख के बहुत सीखने को मिलता है, और दूसरा उनकी स्थिति से हमें बहुत जानने और सीखने को मिलता है। उनकी जो अवस्था होती है, उनकी स्थिति होती है, तो उनके जो ब्लेसिंग हमें मिलते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और जीवन में प्रेरणा देते हैं। And I had the opportunity to be with the daddies in a very close manner and very interesting. I remember that first time I went to Madhuban, Daddy Prakashmani knew that I came from a good family, so she called me and she wanted to know everything from my family. And at that time, when I came to Baba, together with the university, I was also a Hatha Yoga teacher. So Daddy Prakashmani came to know that I was a Hatha Yoga teacher. So next day she invited me to go to her room, and she called all the daddies, Manoha Daddy, and she called Mohini, Little Mohini, and few daddies were there. Didi Man Mohini was there, and all in her room. And she made me to do a demonstration of Hatha Yoga in her room. And while I was doing the demonstration, Daddy Prakashmani and Daddy Manohar were following me and trying to copy me my exercises and so on. So many very beautiful memories. दादियों से बहुत अपनापन महसूस करते हैं सिस्टर लुसियाना। काफी बार मुलाकात हुई है, इस बात से अपने आप पे बहुत उनको गर्व भी है और बहुत अपनापन महसूस होता है। उनको आज भी याद है जब वो पहली बार मधुबन गए थे तो प्रकाशमणि दादी से मिले थे। उनको पता चला कि सिस्टर लुसियाना जो है वो हठ योगा लाइक फिजिकल योगा के टीचर रह चुके हैं, तो उन्होंने अपने कमरे में सिस्टर लुसियाना को बुलाया, दादी रतन मोहिनी को बुलाया, कई 1-2 दादियों को उन्होंने बुलाया अपने कमरे में और उनको कहा कि आप एक नमूना दिखाइए, हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए हठ योगा का जो आप करते हैं। और सिस्टर लुसियाना दादी के कमरे में थोड़ा अपना डेमोन्स्ट्रेशन देने लगे और सारी दादियां उनके साथ वो जो कर रहे थे उसको फॉलो करने लगी। तो ये कहना ये चाहते हैं कि बहुत अपनापन महसूस होता है, बहुत समीप से अनुभव किया है दादियों के प्रेम और पालना को सिस्टर लुसियाना ने। Also, when I used to go to Madhuban, I was very young, and at that time I was very slim, and I used to like to dance. So myself and one sister, we always would prepare dances
in Madhuban and to show to the daddies. And Daddy Junkie used to love to see me and this other sister dancing. She would always be asking, please dance, dance, and we would dance with the lit lamps. It was very, very special to dance for them and to dance for Baba. तो जब भी सिस्टर लुसियाना शुरुआत में जब यंग थे 23 साल की उम्र में जब ज्ञान में आए थे, उसके बाद जब मधुबन जाना शुरू किया उन्होंने, तब उनके हिसाब से वो कह रहे हैं वो बहुत पतले थे उस वक्त, और दादी को इनका नृत्य देखना, डांस देखना बहुत पसंद आता था, क्योंकि बहुत अच्छा डांस करते थे सिस्टर लुसियाना। और उनके साथ एक और बहन थी, उनका नृत्य भी बहुत अच्छा होता था। तो कह रहे हैं दादी हमसे बहुत बार हमसे नृत्य करवाती थी, हमने हाथों में दिए लेके डांस किया है। तो कह रहे हैं हमें बहुत खुशी होती थी दादी के लिए, बाबा के लिए, जब हम नृत्य करते थे तो हमें बहुत खुशी का महसूस होता था। And many times we would go and ask for the daddies for some guidance, for some orientation, and they would explain to us. Like, for instance, I remember that once I was having some doubts. It was many years ago, and I was having some doubts in knowledge and not having very clear about my yoga, my relationship with Shiv Baba, my relationship with Brahma Baba, and so on. So I asked one sister to be my translator, and I went to Daddy Gulzar. And with Daddy Gulzar, I told her what I was in doubt and feeling, and Daddy Gulzar was not understanding. So the translator had to explain some 3 times what was happening to Daddy to understand. And then at the end, Daddy said, but what is the problem? That's not a problem. I mean, what I want to say is that Daddy was so light about all the situation. And sometimes we put some pressure thinking that we have a big problem or we have a big thing in our minds. And Daddy just made it so light and as if it was not a problem. दादियों से कई मार्गदर्शन भी सिस्टर लुसियाना को काफी मिला है जीवन में। शुरुआत के समय की बात है, जब वो नए नए ज्ञान में आए थे तब उनको काफी सवाल होते थे। तो वो एक ट्रांसलेटर को लेके दादी गुलजार के पास गए। उनको सवाल होते थे, मेरा शिव बाबा के साथ का संबंध, ब्रह्मा बाबा के साथ का संबंध, इन सब चीजों को लेके उनको काफी सवाल रहते थे। तो ट्रांसलेटर को लेके जब दादी गुलजार के पास गए तो दादी समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने ट्रांसलेटर को बोला कि आप इनको समझाइए। तो दादी ने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बात बड़ी नहीं होती है। दादी ये बताना चाहते थे बात बहुत छोटी होती है। बहुत हल्के में दादी लेते थे इन सब बातों को कि कोई बात नहीं है। तो पूरे जो हमें लगता है कि बातें बहुत बड़ी है, हमें समझ नहीं आ रहा है, उनको दादी बहुत हल्का बना के आसानी से उसको हमें लाइट फील करवाते थे उन बातों को। Then there was another time, because when I came, we used to have this opportunity to be with Avyakt Babdada and have many meetings with Avyakt Babdada. And there was a time that also something was not going very well in my life. And I told Daddy Junkie, please tell Baba when Baba comes next time. So when I came in front of Baba to meet Baba, I called Daddy Junkie to come and tell Baba what she knew that I have told her. And Baba said, no, don't need to come. I know already everything. And for someone who has such a big fortune, this is nothing. So Baba also makes us to feel so light about anything that happens in our life. उन दिनों अव्यक्त बाप दादा से काफी मुलाकात होती थी सिस्टर लुसियाना की। तो उन दिनों उनको एक समस्या लग रही थी उनके जीवन में। तो उन्होंने दादी को बताया था कि अव्यक्त बाप दादा आएंगे तो मुझे मिल के उनसे ये पूछना है। तो दादी को पता था, जैसे जब नेक्स्ट टाइम अव्यक्त बाप दादा आए और सिस्टर लुसियाना जा रहे थे तो अव्यक्त बाप दादा ने बोला नहीं, आपका जो भाग्य है वो बहुत बड़ा है, आपके भाग्य के सामने ये बातें बहुत छोटी है। तो बाप दादा भी बड़ी बातों को इस तरह से छोटी बना देते थे और हमें हल्का महसूस करवाते थे। Also, I got many very beautiful blessings from Avyakt Babdada. Once Babdada told me that I was the goddess of all the powers and all the virtues. तो अव्यक्त बाप दादा भी इन्हें बहुत अच्छे वरदानों से संबोधित करते थे। अव्यक्त बाप दादा ने इनको एक वरदान दिया है कि आप सभी शक्तियों की और गुणों की आप देवी हो। There was another meeting with Babdada, and he said that I was on his list of the worthy, loving, and serviceable children.
So, I mean, I felt so honored and so happy to be on God's list. So that was also very special. तो बाप दादा ने इनको ये भी कहा हुआ है कि बाप दादा के पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में आप शामिल हो, और वो लिस्ट है बहुत अच्छे सेवाधारी बच्चों की, और इस लिस्ट में आपका नाम शामिल है। तो इस बात से सिस्टर लुसियाना को बहुत खुशी महसूस होती है। There was another time that having a personal meeting with Baba said to me, you will always deserve to have the cooperation of Bab Dada and the love of Bab Dada, because when you came, you didn't think too much and you surrendered immediately. It's thinking that makes things difficult. And I remember that so well, because that's useful not just for me, but for other souls as well, that Baba gave this blessing that I would always be worthy to receive his love and cooperation, because I didn't think too much. I surrendered immediately. बाप दादा ने इनको एक और बात बहुत बड़ी कही हुई है कि आप पूरे पूरे हकदार हो बाप दादा की मदद और प्यार को पाने के, क्योंकि जब आप सेवा में आए, जब आपने अपने आप को समर्पित किया, तो आपने उस बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं किया था। आपने एक झटके में खुद को बाप दादा पे समर्पित किया है, तो आप पूरे पूरे हकदार हो बाप दादा की मदद और प्रेम पाने के। So now that we don't have the daddies anymore with us, we just have Daddy Ratan Mohini and Ishu Daddy. All the other daddies have moved to the advanced party. So what do we have to do? We still have Bab Dada, but Bab Dada also is just in the subtle regions. He's not coming on the corporeal world anymore. There is no physical instrument to receive Bab Dada. So what do we have to do? How can we understand what is going on at this moment? सिस्टर लुसियाना का ये सवाल है हम सबसे कि इस वक्त जब काफी सारी दादियां हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में नहीं है, रतन मोहिनी दादी और ईशु दादी है, बाकी सारी दादी एडवांस पार्टी में चली जा चुकी है, तो ये समय क्या है, इस समय हमें क्या करना चाहिए? बाप दादा भी अब अव्यक्त रूप से मुलाकात उस रूप से नहीं हो पाती है, वतन में मुलाकात होती है बाप दादा से, तो ये समय में हमें अब क्या करना चाहिए? ये सवाल है सिस्टर लुसियाना का हम सबसे। So we can count on the classes, on the experiences of all those who have lived with Brahma Baba, with Mama, with all the Maharajis, all the seniors. And it's very important we have nowadays our Didis that can guide us, that can be an example for us. But I think that Baba gave already all the knowledge that he had to give us. That's why Baba doesn't have any more knowledge to give us. And that's why we have to study the Murli very properly, so that from the Murli we can transform ourselves. Everything that we need to know is in the Murlis. So the Murli is our new way of, not new, but it's the way that we can communicate with Baba now. तो सिस्टर लुसियाना का ये कहना है कि ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं, यही सेवा है, यही पुरुषार्थ का पहला तरीका है कि लोगों के हम अनुभव सुने, दीदियों को देखें, उनके जीवन को देखें, उससे प्रेरणा ले, सबके अनुभव सुने, जो लोग साकार बाबा के साथ, दादियों के साथ जिन्होंने पालना ली है, उनके अनुभव से हम प्रेरणा ले और अपने जीवन में पुरुषार्थ को आगे बढ़ाए। और दूसरा तरीका ये है, उनके हिसाब से ये कहना है उनका कि बाबा को जितना ज्ञान हमें देना था वो सब बच्चों को बाबा अब ज्ञान दे चुके हैं, अब बाबा के पास नया देने के लिए ज्ञान अब एक तरह से नहीं है, मुरलियां नई नहीं चल रही है, तो जो मुरलियां बाप दादा ने चलाई हुई है, बाबा ने चलाई है, उन्हीं को रिवाइज करके हमें उसमें संपूर्णता हासिल करनी है, और यही तरीका है अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का इस वक्त। So we have to attend every day the Murli, and many groups for studying the Murlis. We have been having revision of the Murli every night in New York. They are organizing classes every night, and Brother Ken from Brazil is revising the Murli every evening for 15 minutes during the class. And also Sister Genti from London is revising every Avyakt Murli, Sunday Avyakt Murli.
So we have to give a lot of attention to the Murlis, be present at the Murli, take note of the Murli, and also participate in the revision of the Murlis so that we can absorb whatever Baba is telling us. तो इस समय हमें मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुरली अब एकमात्र तरीका है अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का। बाप दादा आ नहीं रहे हैं, नई मुरलियां चल नहीं रही है, तो जो मुरली अब हम चल रही है उसी से हमें अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। न्यूयॉर्क में हर शाम को एक भाई 15 मिनट मुरली का रिवीजन देते हैं। लंदन में सिस्टर जयंती संडे की जो अव्यक्त मुरली होती है उसका रिवीजन क्लास चलाते हैं। तो सिस्टर लुसियाना के हिसाब से हमें जब मौका मिले ये सब क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, मुरली की नोट्स लेनी चाहिए और बहुत ध्यान पूर्वक मुरली के पॉइंट्स को समझकर अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। Like for instance, last Sunday Murli about the karma teach stage, Baba explained in such depth what it means exactly karma teach. So Baba was explaining that it's not to do any karma, but it's not to be tied to any bondage of karma. लास्ट संडे की अगर अव्यक्त मुरली हम सबने ध्यान से सुनी हो तो बाबा उसमें कर्मातीत अवस्था के बारे में बता रहे थे। कर्मातीत अवस्था क्या है, हमें किसी भी कर्मों में ना बंध के कर्मातीत अवस्था को हासिल करना है, इस बात को बाबा ने लास्ट संडे की अव्यक्त मुरली में बताया था। Baba said in the Murli of Sunday that karmatit means to be beyond. And Baba also explained then whenever we have any vice, that's not a relationship. All the relationships that are based in any kind of vice, even if it's just one vice, attachment, greed, anger, or whatever, fear, it becomes a bondage and not a relationship. So Baba was really explaining that relationships we are going to have when we are karmatit or in the golden age. And before going to golden age, we have to be karmatit now. कर्मातीत अवस्था पे जैसे लास्ट संडे बाबा ने मुरली चलाई थी, हमें समझा रहे थे कर्मातीत अवस्था क्या होती है। कर्मातीत अवस्था होती है उपराम होना, किसी भी कर्म बंधन में ना बंध कर, क्योंकि संबंधों में इस वक्त विकारों की समावेश है, मोह है, सब कुछ एक विकार तो एक संबंध में कहीं ना कहीं दिख जाता है। तो हमें उस विकारों से ऊपर उठना है। सतयुग में जाने से पहले हमें कर्मातीत यहाँ होना है, और कर्मातीत का मतलब ही ये है कि हमें उपराम होना है इन सब चीजों से। Baba also explained on Sunday that the ones who are karmatit, they are not controlled by the sense organs, and even they are not controlled by any disease, any sickness. Even when they are sick, they feel that they are being liberated from all karmic accounts, and they feel happy to be purified with their sickness. And Baba was saying that they are going to feel very little the sickness, because they are going to transform karma in karma yoga. So they are not going to be pulled by the physical senses, and also they are not going to be pulled by any disease or sickness. कर्मातीत अवस्था में आत्मा जो है वो शारीरिक भान से ऊपर उठ जाती है। अगर शरीर बीमार भी है तो भी वो बीमारी का वो अनुभव नहीं होता है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था का अर्थ ये है कि कर्म को कर्मयोग में परिवर्तित कर देना। तो जब कर्मातीत अवस्था हासिल होती है तो शरीर के अगर बीमार भी है तो उसकी महसूसता उतनी नहीं रहती है कर्मातीत अवस्था में। And today in the Murli today, Baba gave very good point, very interesting point, that Baba was saying that he came for the poor children, that the rich children are not capable to absorb Gyan, because for them it's already heaven, it's already paradise. And so they are not able to surrender to Baba, they are not able to understand and to make the decision of the renunciation that it's required. आज की मुरली में जैसे हम सबने सुना, बाप दादा ने कहा है कि बाप दादा गरीब नवाज है। जो गरीब बच्चे हैं वो बाप दादा के ज्ञान जल्दी उठा सकते हैं, क्योंकि जो साहूकार है उन्हें यही लगता है कि हमारे लिए स्वर्ग इस वक्त यही है, और इस बात से उनको बाप दादा से वो संबंध वो नहीं जोड़ पाते हैं जो गरीब नवाज बाबा गरीब बच्चों से जोड़ पाते हैं। And it's true, because it's very different, the understanding that we have of prosperity and the understanding that the world has of prosperity.
for us Brahmin, prosperity is not just to have a lot of money, but there are 4 aspects in prosperity. Prosperity in the self, prosperity with others, prosperity in terms of money, and prosperity in terms of health. बापदादा ने ये कहा कि इस दुनिया के लिए संपन्नता का अर्थ कुछ और है और हम ब्राह्मण के लिए संपन्नता का अर्थ कुछ और होता है। 4 अर्थों में संपन्नता बताई जा सकती है, स्व से, दूसरों से, और पैसे के रूप में, धन के रूप में, और तीसरा था कि सॉरी तीसरा था wealth and health. सॉरी जी हेल्थ, तीसरा था स्वास्थ्य के रूप में। तो धन के रूप में और स्वास्थ्य के रूप में 4 चीजों से संपन्नता बताई जा सकती है। Baba was speaking a lot about the rich and the poor today in the Murli, and we understand that the rich ones are really the ones who have the wealth of knowledge, who have the wealth of the virtues, who have the wealth of powers. Because nowadays, Baba was saying in the Murli today that even the rich people, they don't have happiness and they feel empty inside. Though they have a lot of money, they feel empty inside. So for us, the real prosperity, the real richness is to have the knowledge and the virtues and the powers. तो सही अर्थ में संपन्नता और साहूकार वो है जिसके पास इस वक्त ज्ञान है और गुण है। जो दुनिया जिसको साहूकार और समझती है, उनके पास अंदर से वो खाली है। उनके पास धन है लेकिन अंदर से वो खोखले हैं, खाली है। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास इस वक्त के समय में ज्ञान और गुण है, वो सही मायने में संपन्न है। Excuse me, sister. And in terms of relationship, Excuse me, in sister. terms of the Sister. Hello. Hello. Excuse me, sister. We would like to know something about Brazil, the challenges about service in Brazil, the people there, and the belief of Brazilian. So we would like to know about. Okay, I will just finish what I'm saying and then I can explain that. Yeah, no problem. And in terms of relationship, the true prosperity of relationship is to have respect and cooperation amongst people. संबंधों में संपन्नता का अर्थ ये कि एक दूसरे के प्रति हमको मान हो, यही, और हम एक दूसरे को सहयोग दें, यही संबंधों में संपन्नता का सही अर्थ है। And prosperity in terms of health is when, even when you are sick, you are not giving trouble, you are not giving problem to other people, but you are, as Baba says, facing the disease or facing the sickness with a lot of tolerance and overcoming the disease with powerful thoughts and not allowing wasteful thoughts to come. तो जो स्वास्थ्य को लेके संपन्नता की बात है, उसमें ये बात है कि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक ना हो तो हम दूसरों को परेशान ना करें, और उससे, जैसे बाबा ने कहा, कर्मातीत अवस्था में हमें वो महसूसता नहीं होगी। अगर हम बीमार भी है तो उस अवस्था को पाना, ये हमारी संपन्नता होगी। And the real wealth, it's not just to have a very big bank account, but it's to use the money for the benefit of others. Because if we can use everything that we have in a proper manner, we are going to be creating our future fortune for eternity. और असली धन वो है जो बैंक में हमारे पास धन पड़ा है, उसको हम असली धन नहीं कहेंगे, लेकिन धन जो हम दूसरों की सेवा में लगा के उसको 4 गुना बढ़ा सकते हैं, वही हमारा असली धन है जो औरों की सेवा में काम आए। So now explaining a little bit about Brazil. Brazil is a very big, it's one of the 6 biggest countries in the world. It's 3 times bigger than India. So Brazil जो है वो काफी बड़ा देश है, दुनिया का 6वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, और 3 गुना भारत से ज्यादा बड़ा है ब्राजील। But we have a much smaller population, is 220 million people. लेकिन जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो जनसंख्या है, वो भारत से काफी कम, 120 मिलियन की जनसंख्या है वहाँ पे, लेकिन देश जो है वो भारत से 3 गुना बड़ा है। It's the biggest Christian country in the world. ब्राजील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश है।
And my family, my Lokik family, is very Paka Christian, very Catholic. और सिस्टर लुसियाना का जो परिवार है वो पक्का क्रिश्चियन कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार है और पक्का परिवार है. And majority of the Brahmins who come in Gyan here, they are also from Catholic family, and very few are from other families. But we have very few Indians in Brazil. Amongst our 600 Brahmins, we don't have even one Indian Brahmin here. ओके. तो ब्राजील में जो भी ब्राह्मण बनते हैं वो काफी सारे कैथोलिक क्रिश्चियन ही होते हैं. कुछ बहुत कम होते हैं जो कहीं और परिवार से बिलोंग करते हैं. बाकी मेजॉरिटी लोग कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं. लेकिन ब्राजील में इंडियंस बहुत कम है. 600 लोगों का जो क्लास चलता है उसमें एक भी इंडियन नहीं होता है. We have few Indian families that come to Brazil to work in the university, to work in the commerce, because in the area of Amazon, we have free commerce. So some Indian families, especially Sindhis, come there for this free commerce. And some came on duty. We have very good relationship with the embassy, Indian embassy. In our capital, we have very good connection with the Indian consulate here, but very few Indian families, and they are not very interested in spirituality. The Indians who live in Brazil, they are more interested in socializing, in bhakti, but not, and we don't have, we have one Hindu temple in Brazil, which is the Hare Krishna temple, just one Hindu temple in whole Brazil. तो इंडियन काफी कम है. कुछ परिवार हैं इंडियन परिवार ब्राजील में जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं. सिंधी परिवार कई हैं जिनके संपर्क में है. सेंटर से इंडियन कॉन्सुलेट जो है कैपिटल में, वहां से संपर्क है. लेकिन सिस्टर लुसियाना का ये कहना है कि जो भारतीय है ब्राजील में, उन्हें आध्यात्मिकता में इतनी दिलचस्पी नहीं है. उन्हें सोशलाइजिंग, दूसरों से मिलना, व्यवहार, मिलना जुलना, ये करना, भक्ति करना, इन सब में वो ज्यादा है आध्यात्मिकता की. और इंडियंस जो ब्राजील में है वो कम है. और पूरे ब्राजील में एक मंदिर है, हरे कृष्णा का मंदिर है. पूरे ब्राजील में एक ही मंदिर है. And souls here have a lot of love for God, so it's very easy to speak about God to them. There is no problem. Also, vegetarian diet is becoming more and more popular, and because of health benefits, people are very open to a vegetarian diet. But people have a lot of difficulty with celibacy here. With what? Celibacy. Celibacy. With purity, with celibacy. Oh, okay. So ब्राजील में परमात्मा की बात करना थोड़ा आसान है क्योंकि लोगों की बिलीफ है परमात्मा पे. परमात्मा की अगर आप भगवान की बात करें तो वो ऑफेंड नहीं हो जाते, ना ही उतना स्ट्रिक्ट है. लोगों को प्यार है, बात सुनते हैं. और इस वक्त के समय में शाकाहारी बनने की बात करना भी आसान है क्योंकि स्वास्थ्य के रूप से आप लोगों को समझा सकते हैं कि शाकाहारी बनने में कितने फायदे हैं. तो लोग इस बात को भी अब स्वीकार करते हैं समय अनुसार. And we have about 20 centers, BK centers in Brazil, and about 20 Gita Pachalas, so 20 centers and 20 Gita Pachalas in Brazil, and we have about 600 Brahmins here. ब्राजील में 20 सेंटर है और 20 गीता पाठशाला, इस तरह से 40 यूनिट चलते हैं और सभी को मिला के 600 आत्माएं हैं ब्राजील में. लेकिन महत्वपूर्ण बात है उसमें से एक भी भारतीय नहीं है. And since March 2020, we started to have classes just online because everything is closed here. So now I know that India is in a very bad situation in terms of the virus, the COVID. But before India became the #1 country in the world with this problem, Brazil and the United States were the two worst countries in terms of the virus. मार्च 2020 से क्लासेस जो है सारे ऑनलाइन चल रहे हैं ब्राजील में क्योंकि इस वायरस को लेते हुए. और इस वक्त सिस्टर लुसियाना कह रही है कि जैसे भारत में सबसे हालत इस वक्त खराब है, भारत नंबर 1 पे है प्रॉब्लम्स के तौर पे जो वायरस को लेके हो रही है. लेकिन उससे पहले अमेरिका और ब्राजील ये 2 नंबर 1 पे चल रहे थे इन टर्म्स ऑफ कोरोना के जो केसेस हो रहे थे उस केस को लेके.
So since March 2020, we started all the classes, all the courses online, and we just allow very few students to come to our centers. So no more than 10 students in the Murli, very small class. All the ones that want to attend the Murli, they have to attend by Zoom, by internet. And we have been having 4 times a week national Murli. So about 300 BKs have been attending Murlis 4 times a week, and 3 times a week they attend Murli online on their center. So मार्च 2020 से जैसे सिस्टर लुसियाना ने कहा कि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। जिन भी लोगों को क्लासेस अटेंड करने हैं, कोर्स अटेंड करने हैं, सभी कुछ ऑनलाइन है और बहुत कम लोगों को सेंटर पे अलाउ किया जाता है इस वक्त वायरस के चलते हुए। इस वक्त 10 लोगों का क्लास सेंटर पे चला सकते हैं वो लोग मैक्सिमम, और बाकी जिनको भी ज्वाइन करना है वो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। और हफ्ते में 4 दिन नेशनल मुरली चलती है, तो एक ही समय पे सारे ब्राजील में जो भी लोग हैं सारे ज्वाइन करेंगे। और हफ्ते में 3 दिन जो है वो लोकल सेंटर्स पे मुरली चलती है, तो लोकल सेंटर के जूम ग्रुप को, इंटरनेट ग्रुप को वो ज्वाइन करेंगे। And here we are very paka in the protocol to attend Murli. All of us, if we are with a second or third person, we wear mask. We have to keep 2 meters between one person and the other. We are very paka with all of this because the situation of the virus in Brazil was very, very bad. And now I'm so sad to know that in India you are having a very serious situation also with the virus. तो जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, जो बातों का हमें ध्यान रखना है, उन बातों पे बहुत पक्के हैं ब्राजील में ये सभी लोग कि हमें अगर 2 फीट की दूरी बनाए रखनी है, 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है, मास्क पहनना है, क्योंकि ब्राजील में जो इंडिया की इस वक्त हालत है वैसी ही हालत ब्राजील में एक समय पे थी। और सिस्टर लुसियाना को इस बात का थोड़ा खेद है कि इस वक्त इंडिया बहुत खराब परिस्थिति से गुजर रहा है वायरस को लेकर। And we have started a virtual center. We opened a center that is just online. And in this center, we have Raja Yoga classes online. We have Murlis online. We have all courses like positive thinking, anger management, self-esteem courses, all online. We have been having lectures 5 times a week. We have cooking classes in this virtual center. And next week, we are going to start also exercise, physical exercise, hatha yoga and other exercises through the virtual center to benefit the BK family and our public. तो राजयोगा जो क्लासेस चलते हैं, वर्चुअल सेंटर इन्होंने खड़ा किया है। जो भी ऑनलाइन सबको अभी अटेंड करना है तो उसको वर्चुअल सेंटर के तौर पे संबोधित कर रहे हैं, और उसमें राजयोगा क्लासेस चलते हैं, मुरली चलती है, रिविजन्स चलते हैं और काफी सारे अलग अलग क्लासेस जैसे पॉजिटिव थिंकिंग पे, एंगर मैनेजमेंट पे, ये सारे क्लासेस चलते हैं। अभी कुकिंग क्लासेस भी चल रहे हैं और वो सोच रहे हैं अभी एक्सरसाइज सेशन जैसे हठ योगा, जिसको फिजिकल योगा हम कहते हैं, उसका भी सेशन वो लोग ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं। And even when this virus disappears, we think that service will never be the same as before. We are going to continue with the virtual center, and we are going to have 2 kinds of service, presential and virtual, because many students, they don't want to go back presential anymore. They are liking very much the Murlis through Zoom. They are liking very much the classes because they don't have to take traffic. They don't have to take distance and take time to go to the center, but then they are going to the center once a week or twice a week. But the rest of the time, they want to continue with Zoom classes. सिस्टर लुसियाना को ये लगता है कि इस वायरस के चलते सब कुछ अब पहले जैसा नहीं होगा। ये जो नया दौर चला है ऑनलाइन क्लासेस का, ये कंटिन्यू रहेगा और 2 हिस्सों में सेवा होगी। एक हिस्सा वो होगा जो सेंटर पे आएगा, लेकिन कई लोगों को अब ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत पसंद आने लगे हैं ताकि लोग अपने घर से अटेंड कर पाते हैं और हफ्ते में 1-2 दिन सेंटर आते हैं। तो यही अब फ्यूचर रहेगा, सेवा होगा सिस्टर लुसियाना के हिसाब से।
I am the main sister here in Brazil, but we have brother Ken, who is my senior brother, who is the coordinator of all Latin American centers. He also lives in the same center that I live. So Brother Sister Ken is Luciana, from Australia. Brother Ken is from Australia. He took Gyan in London, and he has been with Baba. He was one of the first double foreigners. He is with Baba since 75. तो सिस्टर लुसियाना जो है वो मुख्य प्रभारी है ब्राजील के सेंटर के। उनके साथ ब्रदर कैन है, वो उनके सीनियर है और वो ऑस्ट्रेलिया से है और उन्होंने लंदन से ज्ञान लिया था। और ब्रदर कैन जो है वो वन ऑफ द जो पहले डबल फॉरेनर्स निकले थे उनमें से एक है ब्रदर कैन। और 1975 में ब्रदर कैन ने इस ज्ञान को धारण किया था। Brother Rushi, I want to say to you that you are an excellent translator, because I do understand some Hindi. I can grasp everything that you are translating, and your translation is absolutely perfect. So thank you so much. So Thank you, if sister. anyone wants to ask any other question, I'm ready to अब answer. किसी को कोई सवाल है तो सिस्टर लुसियाना चाहेंगे वो उनसे पूछे और सिस्टर लुसियाना को खुशी होगी उनका जवाब देने में। किसी को कुछ पूछना है? फाल्गुनी बहन कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। फाल्गुनी बहन या कुछ कहना चाहे? फाल्गुनी बहन। Sister Luciana says this is Falguni, Sister Falguni, and she is professionally CA and also doctor. Doctorate सेवा करी तो मैं फाल्गुनी बहन? Quantum healing, ma. Okay. PhD, yeah, PhD in quantum healing. Okay. So she is PhD in quantum healing and she is also CA, chartered accountant. Okay, Falguni Thank bhai. you. Om Shanti. Namaste, sister. Yes, Very Om nice. Shanti Falguni bhai. जी बहुत खुशी हुई, very much happy hearing your experience. So very nice, like Baba's Bhagya, you know. So feeling very much happy to hear, like one in room, you know. So Zoom meeting is very useful for everyone, no. So I am also, this is my first day actually. First day to meet all this wonderful Atma. So I am very much lucky to have you and hear you. Thank you so much. And Rushi brother, I am also very much thank you and happy to hear you once again, because मैंने पहले भी आपको सुना है, बहुत बार सुना, और आपके लौकिक जो आपका संस्कार है उसी के लिए तो मिनेश भाई और बहन को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ क्योंकि मेरी भी एक बिटिया है, तो बाबा के बच्चे को देखकर तो खुशी होती है ना, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे ये सिस्टर यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड हिंदी, नो? So actually I understand Tora. Yes, because I love to speak in Hindi instead of Gujarati. My Laukik daughter, first language she has learned is Hindi, not Gujarati. Mother tongue is Gujarati, no? But she learned Hindi. Yeah. So her first language was Hindi. Because when I came to know, no, Baba's language is Hindi. So I am very much, feeling very much happy. So I love to speak in Hindi also. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और बस नो वर्ड्स फॉर दैट तो आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इसमें जो डॉक्टर जयंत भाई जी एंड चंपा बहन जी है, उनको भी मैं 1 साल से सुनती आई हूँ, देखते आई हूँ। मिनेश भाई को तो हम सुनते हैं, देखते हैं, साथ में जैसे डॉक्टर साहब को भी देखते हैं तो लगता है कि भ्राता जी जो बाबा ने ऐसा एक युगल को निमित्त बनाया है गुजरात में, तो दैट्स व्हाई आई एम रियली वेरी मच हैप्पी। एंड सीखते हैं, ऑनलाइन भी हम लोग सीखते हैं ना, तो मी एंड माय युगल, माय हस्बैंड, my yugal also, we are like learning from this kind of people, no? And I have only one daughter, so she is right now 21 years old. So thank we are you, also learning from them. So thank you so much, sister. Thank you. Thank you, Minesh bhai. Thank you.
You're welcome. Yeah, anyone else wants to ask anything, Mnesh bhai? I am asking to everyone, आप भाई किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो हमारे पास थोड़ा समय है. We can ask. मुकेश भाई कुछ कहना है? अच्छा, शिव कुमार, Sister Luciana, this is brother Shiv Kumar, and we call him Shiv Balak. I think you are aware with him. Yes, from Pandav Baba, na? Yes, sister. Om Shanti. Luciana Om sister. Shanti, you are living there now. Yeah, बहुत समय के बाद आपको मिले हैं. Very long time I have seen today. Yes, because Very now long we are years. coming. Yeah. Yeah, every time we come to India, we come through ORC, the retreat center from Siserasha and Brother Brij Mohan. So not going to Pandav Bhavan anymore, but you are living in the city now, brother. Where are you living? In Pandav Bhavan. You are in Pandav Bhavan, yes. Now, many years I don't go to Pandav Bhavan. But of course, I know Shiv Kumar Bhai. So many times we stayed in Pandav Bhavan. So many times. आप How जब are you? आते Are थे, you fine? आप जब एयरपोर्ट पर आते थे तो मुझे रिसीव करने का मौका मिलता था. Many times you took us to the airport. Yes. So nice to see you, Shiv Kumar Bhai. Wonderful, wonderful. Shiv Kumar Bhai is regular participant of this session. Okay, regularly is listening to this experience sharing session. He is very fond of this. Nice. Yeah, he regularly log in. And he आपको देख करके मुझे आज बहुत खुशी हुई है. Brother Shiv Kumar is expressing his happiness to see you today. Yes, I'm very happy to see him since so many years. Yes. Brother Shiv Kumar, Brother Mahesh Bhai from Pandav Bhavan as well, full band. I remember all of you. Yeah. How is full band? In the room. Okay. So one more question before we do some moments of meditation and we finish with some moments of meditation. Is there anyone who wants to ask any other question, Minesh Bhai? No, that he wants to ask. भाई आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? ब्राजील के बारे में, ब्राजील की सेवाओं के बारे में कुछ भी अगर सिस्टर लुसियाना को पूछना हो, जानना हो तो पूछ रहे हैं, अगर कोई सवाल पूछना चाहता हो. What were the initial hurdles before 41 years? Because 41 years are not a little time span. So what were the hurdles when you started services in Brazil? What when I started service in Brazil? I couldn't understand everything that he said, Rushbai. The trouble that you were facing, the hurdles that you were facing when the service got started in Brazil, what was it? They want to know that. Because initial phase of the service is always difficult, so they want to know the difficulties that were faced. In the beginning, I was very young, and all the students were very young. It was a time when all the students had about 20 years old. So we had two problems. One, we were not very emotional mature. So we were inexperienced. So we did many things that were like of young people, not very mature, not very sensible. So I think that this was one thing. And second, because everyone was young, all 20 years old, we didn't have much money. I remember that in the first center that we had when we opened the center, in the visiting room, the sitting room, we didn't have any chairs, we didn't have any couch. All we had, it was some cushions on the floor. That was the only thing that we had. And we had very little money to do Baba service because not everyone young, so they couldn't contribute much. I think that this was the two things that we faced problem in the beginning. But one thing very good that happened, we were the first spiritual group that started in Brazil.
before other spiritual organizations, before Swamis and Hare Krishna and other societies from India. So people gave a lot of time, a lot of attention to the Brahma Kumar's work. And we had a lot of opportunity to go on TV, to be on newspaper. So we had a lot of coverage of Baba's work. तो दो समस्याओं के बारे में सिस्टर लुसियाना ने बताया। जब वो ज्ञान में आए तो उनकी उम्र काफी कम थी, और जो जिन लोगों के वो संपर्क में आ रहे थे, जिनको ज्ञान सुना रहे थे, जो ग्रुप बन रहा था, उनकी उम्र भी काफी कम थी। तो कम उम्र होने की वजह से वो जो मैच्योरिटी होती है वो नहीं आती उस उम्र में, वो एक समस्या थी। और दूसरा ये कि उम्र कम थी तो पैसे भी कम थे उस वक्त, तो धन की समस्याओं की वजह से जो पहला सेंटर जब खड़ा किया तो जो मेन हॉल था उसमें ना कोई कुर्सी थी, ना कोई सोफा था, कुछ नहीं था, बस कुछ तकिए नीचे रखे हुए थे, और इस तरह से वो क्लास चलाते थे। क्योंकि सिस्टर लुसियाना खुद कम उम्र के थे, यंग थे, और जो लोग आते थे वो भी कम उम्र के थे, तो सबके पास धन उतना नहीं हो पाता था देने के लिए, तो काफी कम धन के तौर पे उन्होंने ये सेवाओं को चलाया है। और दूसरी मदद उनको ये मिली है कि ब्राजील का सबसे पहला एक तरह से आध्यात्मिक ग्रुप बना है, जो सिस्टर लुसियाना का ग्रुप था वो। तो इस वजह से मीडिया कवरेज वगैरह सब कुछ काफी मिला है, लोगों ने काफी अटेंशन दिया है इस ग्रुप पे, और सभी मीडिया में हर जगह इनको ये मिलता था, और इस तरह से सेवा फैली है इस तरह से। And now we just have one BK center that it's a rented house. All the other centers belong to Baba. So the organization grew a lot, and we have been doing lots of service with the community, with the VIPs, and it's a very beautiful Baba's work, Baba service now that we have in Brazil. तो जब शुरू हुआ था तब ये हालत थी कि एक कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, बस कुछ तकिए रखे हुए थे, और आज जो 20 सेंटर है उसमें सिर्फ एक सेंटर किराए पे चलता है, बाकी के 19 बाबा के अपने सेंटर्स है ब्राजील में। One other problem that we have in Brazil, Brazil is a very violent country. There is a lot of violence. So our houses have to have fences, our houses have to have alarm, our houses have to have locks. So it's a very violent country. And we did have some problems, like last week, bandits entered in one of our centers and robbed many things. But you see, we have been protected. That this has been, I think, twice or three times in these 40 years. But all the other time we have been protected. We have been having Baba's protection. And of course, we are also very careful to not to bring inside of the center anyone that we find that it's not someone reliable. So we have to be very careful here. ब्राजील में जो है वो क्राइम रेट काफी हाई है, चोरी वगैरह मारपीट ज्यादा हो जाती है, तो हर जगह सेंटर्स पे ताले सब लगा के रखना पड़ता है, इन बातों का काफी ध्यान रखना पड़ता है। इतने सालों में 2 से 3 बार ये हो चुका है। एक अगले साल, पिछले साल हुआ कि डकैत घुस गए और सेंटर में काफी चीजों को चोरी होकर गई, लेकिन कई बार बचे रहे हैं, बाबा के सेंटर्स को बचाया हुआ है। लेकिन 2 से 3 बार फिर भी सेंटर्स पे भी ये हादसा हुआ है कि डकैत घुसे और चोरी हो गई हो। तो किसी को भी जो अननोन व्यक्ति हो उनको सेंटर्स के अंदर अलाउ नहीं किया जाता है उस वक्त। ऐसे ही जान पहचान हो, थोड़ी मुलाकात हो, फिर ही उनको अंदर आने दिया जाता है। Okay, I think that it's already 9:30 for you. I think that we can close with some moments of meditation. And I thank so much, Brother Minesh, for your invitation, and Brother Rushi for your excellent translation, and all my brothers and sisters from Vadovara. And I'm very happy to be with you. And especially, I was especially delighted to see Brother Shiv Kumar, my lovely brother that I haven't met since many years. Om Shanti. Let's have some moments of meditation. But sister, I have one more question, if you don't mind. Yes. Because you have born and brought up in Brazil, so I think you were not aware with the deities. So when you heard this knowledge and heard about Krishna and Lakshminarayan, Brahma, Vishnu, Shankar,
So wasn't it very difficult for you? For me, it was not difficult for two reasons. Because I was already a Hatha Yoga teacher, I was already acquainted with the Indian philosophy. I had been to India before Gyan. I have gone to all four corners of India. I have taken dips in the Ganges before Gyan. I had a picture of Krishna in my bedroom before Gyan. So for me, it was not a problem. But for many people, it's a problem. They don't. So we have to explain the Indian stories, the Bhakti stories. We have to explain to them. And we have to bring more the understanding of the soul, about Baba, about God, about the drama. We don't go so much to the Bhakti stories, but people like to listen. So we tell them, we explain to them, but we don't say much about this in public. We say this more for the Brahmin family. We make special classes to explain. Like yesterday, someone contacted me because wanted to understand exactly what was the story of the true Narayan. So we explain to them, but not so much into the public. We explain more for the Brahmins who are listening to the Murlis. But for me, it was not difficult because I was already in Hatha Yoga teacher. And I'm going to tell you one secret that Daddy Janki told me and Brother Bridge Mohan told me. They think that I am a second birth soul in Gyan. They even think that they know the soul that I was. And they even introduced me to my family, my sisters from other birth. If this is real or not, I don't know. But Brother Bridge Mohan and Daddy Janki, they said many times that I've been in the Yagya before. So for me, it's not difficult. Okay. So, bhai, would you please translate? Though it's too मिनेश long. भाई का ये सवाल था कि आप जैसे ब्राजील में पैदा हुए हैं, ब्राजील में पले बड़े हैं, तो आपको देवताओं के बारे में जो जब ज्ञान मिला तो ये समझना आपके लिए कितना मुश्किल था, कितना आसान था और कितना मुश्किल था? तो सिस्टर लुसियाना का ये कहना है कि उनके लिए उतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो पहले से एक हठ योगा के टीचर रह चुके हैं, फिजिकल योगा सिखाने के टीचर रह चुके हैं। ज्ञान में आने से पहले वो एक बार भारत विजिट कर चुके हैं, गंगा में डुबकी भी लगाई हुई है ज्ञान में आने से पहले। उनके कमरे में श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ था ज्ञान में आने से पहले। तो जब उनको ज्ञान मिला तो ये सब समझना और स्वीकार करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन दूसरों के लिए काफी मुश्किल होता है। उनको समझाना पड़ता है देवताएं क्या है, भारत की कहानियां, भक्ति की कहानियां सब सुनाना पड़ता है। अभी पिछले हफ्ते की एक बात की सिस्टर लुसियाना ने, किसी ने फोन करके उनको पूछा कि सत्यनारायण की कहानी क्या होती है, लेकिन पब्लिक में ये बातों को वो नहीं बताते हैं। पर्सनली ब्राह्मण जो सेंटर पे आते हैं उनको ये बातें वो बताते हैं और उनको सिखाया जाता है और ये मेहनत करनी पड़ती है उनको सिखाने के लिए। और एक और बात, राज की बात सिस्टर लुसियाना ने बताई, जैसे दादी जानकी का और ब्रिजमोहन भाई का ये पक्का मानना है कि सिस्टर लुसियाना का ये दूसरा जन्म है ज्ञान में। इस जन्म के पहले भी वो यज्ञ में ये आत्मा यज्ञ में ही रही थी और उनको ये भी पता है कि किस परिवार से ये आत्मा इस जन्म में आई हुई है, तो उनको वो भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि ये आपके पहले के जन्म का परिवार था। तो उन दोनों का ये पक्का मानना है कि उनका सेकंड बर्थ है ज्ञान में। Wow, thank you, Om Shanti. So let's have one moment of yoga and I'll meet you again in Madhuban at some point. Sure. Thank you. And I am very happy to know that you are one out of the hit list of serviceable children of Baba. So congratulations for that and having special honor of first student of Latin America. Very good and congratulations for that. चंपा बहन, दो शब्द आप कहे फिर बाबा की याद में बैठेंगे। चंपा बहन। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। आपका अनुभव तो सुना, लेकिन आपका चेहरा याद रह जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ आपके जैसे ही एक बहन है, विनोद भाई, विमला बहन। मैं सोच रहा था। हाँ, विमला बहन जैसे ही, जो आपने बोला ना, दादी ने और बोला कि आप भारत के ही हो या दूसरा जन्म बाबा के ज्ञान में थे और वहाँ लिया है, तो आपका चेहरा तो याद रह जाएगा।
क्योंकि हम लोग इतना सुनते हैं रोज अनुभव, तो चेहरा याद नहीं रहता है, अनुभव थोड़ा थोड़ा याद रह जाता है। तो आपका तो याद ही रहेगा। और आपको हम निमंत्रण भी देते हैं कि जब कोरोना खत्म हो और आप इंडिया आओ मधुबन में, तो बड़ौदा में जरूर जरूर आना। और साथ में ऋषि भाई को भी बहुत दिन से देखा, और फाल्गुनी बहन आपको भी बहुत बहुत वेलकम है, और रोज आते रहिए। और ऋषि को तो बहुत दिन से देखा है, ऋषि भाई तो बोला ही नहीं जाता है, ऋषि बोला जाता है ऋषि। तो ऋषि भाई को भी बहुत बहुत थैंक्स है, जो आपके जो बातों को सबके सामने रखा। और विनेश भाई, दरवेश भाई भी आज था, लेकिन उसका दरवेश भाई भी थे, अभी हैं? शायद नहीं है। दरवेश भाई भी थे, अभी नहीं है शायद। लेकिन उसका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा था, चेहरा हाँ, नहीं अंधेरे दिखाई दे में, रहा। अंधेरे में था। अच्छा, उनको भी सर्वेश भाई, आप भी बाबा की याद में स्वस्थ रहो और मस्त रहो। ओम शांति। अभी योग करेंगे। Om Shanti, sister. Thank you. Let's sit 1 minute in Baba's yard, हाँ। and then we close. There's a world I used to know, a world where love can flow through our minds. I can see